nursery babies. How are you all? Hope you all are fine and fit at your home. Right? Myself Kinjal Jani from Market and Drama Space. Now, do you know which festival is coming? Yes, Diwali is coming. No, what is Diwali? When Ram Bhagwan 14 साल के बाद अपने घर अयोध्या आए थे, तब से हम लोग दिवाली मनाते हैं. Now, what do we do in Diwali? We decorate our house. We wear new clothes. हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे जलाते हैं. We decorate our house. Yes, we put diyas. We hang तोरन्स. और आपकी मम्मा रंगोली भी बनाती है ना? Yes, very good. Where do we go in Diwali? Yes, we go to our relatives' house, right? But इस टाइम नहीं जाना है because कोरोना वायरस चल रहा है ना. और अगर आप जा भी रहे हो तो आपको पूरी सेफ्टी के साथ जाना है. Okay? Now, what do we eat in Diwali? We eat all kinds of sweets, namkeens and our favorite dishes, right? Now, I'm going to tell you one story related to Diwali. So let's go ahead. Diwali is a festival of joy and prosperity and the celebration of victory of good over evil. This is the story of Ram and Ravan. Thousands of years ago, in the city of Ayodhya, there was a wise and good king named Dashrath. दशरथ राजा अपनी 3 पत्नियों और 4 बेटों के साथ रहते थे, लेकिन राजा दशरथ की एक पत्नी राम से बहुत जलती थी. उन्होंने राम को 14 साल के लिए वनवास यानी कि जंगल में भेज देने की मांग की ताकि उनका बेटा भरत राजा बन सके. Having once promised his wife to fulfill any wish of hers, the helpless king exiled Ram to the forest. राम अपनी पत्नी सीता और प्यारे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल जाते हैं. कुछ साल वनवास के बाद एक दिन सूर्यपंखा नाम की एक राक्षसी राम को देख के शादी की इच्छा बताती है, लेकिन राम मना कर देते हैं और उसे लक्ष्मण के पास जाने के लिए बोलते हैं. बट लक्ष्मण ऑल्सो रिफ्यूज्ड. Enraged, Surpankha showed her true form and Lakshman cut off her nose and ears. The demoness went wailing to her brother, who was none other than Ravan, the demon king of Lanka. रावण गुस्से में आकर राम से बदला लेने की ठान लेते हैं. रावण दूसरे असुरों की मदद लेते हैं जो एक और सुनहरे हिरण का रूप लेकर राम और लक्ष्मण का ध्यान भटकाते हैं और रावण कुटिया से सीता का हरण कर लेता है. When Ram and Lakshman returned, Sita was missing. They realized that something very bad had happened while they were gone. तो तुरंत ही वो दोनों सीता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं. रास्ते में उनको वानरों और भालुओं की सेना मिलती है जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है. उनमें से एक वानर का नाम था हनुमान, जिसने राम की हमेशा सेवा करने का प्रण लिया था. Now Hanuman was no ordinary monkey. He could fly over mountains, change size at will and had superhuman strength. वो एक ही छलांग में पूरा समुंदर पार कर सकते थे, इसीलिए वो राम के सबसे प्यारे मित्र बन जाते हैं. It was Hanuman who finally found Sita in one of Ravan's beautiful garden. वो सीता से वादा करते हैं कि राम उन्हें छुड़ाने के लिए जल्द ही आएंगे. Hanuman came back to Ram with Sita's whereabouts, and the army of monkeys and bears marched
to Lanka. जल्द ही दोनों शक्तिशाली सेनाओं के बीच में जंग छिड़ जाती है। राम की सेना असुरों की सेना को मार देती है, सिवाय के रावण। इसलिए अब ये जंग सिर्फ राम और रावण के बीच में रह जाती है। राम gave Ravan one last chance to apologize and returned Sita. लेकिन रावण तो राम पर हथियारों की बारिश कर देते हैं। राम भी लगातार रावण पर प्रहार करते रहते हैं, पर फिर भी वो रावण को हरा नहीं पाते। Ravan's brother Vibhishan told Ram that Ravan's weakest point was in his navel. Using an arrow given to him by the gods, Ram shot Ravan in the navel and killed him instantly. So Ram and his love Sita were finally reunited. 14 साल का वनवास पूरा करके राम, सीता और लक्ष्मण अपने घर अयोध्या लौट आते हैं। The entire city was waiting for them. The streets were decorated with flowers and lamps. This is why we celebrate Diwali. Hope you enjoyed the story. Now we will decorate our space and like this आपको भी आपके घर को decorate करना है. Okay? So let's go. First we will hang this toran. Like this we have to hang our toran. Now we will put diyas. Now I'm going to tell you some basic rules about firework safety. So for that I'm going to show you some crackers. Rocket, फुलझड़ी, flower pot और teta, right? पटाखे जलाने के लिए अकेले बाहर नहीं जाओगे, गो विथ योर पेरेंट्स और किसी बड़े के साथ जाओगे. ओके, सो बी सेफ ड्यूरिंग दिवाली. टेक केयर. बाय बाय.